So is screen visible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. Yes, So ma'am. let's start. Okay. Okay. So let's start. Let's say that I want to write a program where I can insert my own detail. Like my output screen should be look like something like this. Let's say this is my output screen, and first it will ask me to okay. First it will ask me for the roll number, and it will prompt here, and here I can enter my details like okay, whatever the roll number, let's say 101. Then name, again it will prompt and I will enter my name XYZ. Then let's say gender, and I will enter something F or M, whatever. Then percentage, and I'll enter, let's say, 70.68. So this is my output. I want this output. 0, 1. Okay, so is this clear that what we are going to do now? Yes, ma'am. So always keep in mind one thing. Whenever you start your program, whenever the definition is given to you, first think about the output कि भाई मेरा output screen कैसा होना चाहिए, मेरा output screen पे क्या आना चाहिए. Because once you are clear about your output, only then you will be able to write the actual correct program with the correct logic, right? So always it should be clear in your mind that what should be the output. So this is my output. Chitvir ma'am can't attend lecture. I will watch later and take notes. Okay, right. So always keep this thing in your mind clear that what should be the output. Okay, now you have to tell me that what we need to do in a program. What, how will we write the program? So you have to tell me. I'll write the program here. चलो बोलो फटाफट क्या लिखेंगे. You can keep your notebook open because you have done only one program. So of course you need reference. But you have to tell me that what should I write. Include hash include चलो वो सब पार्ट हम जाने देते हैं. विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द void main. ठीक है, directly void main. Okay, so from here we will start. So first what I need to write. print. Very first. No, ma'am. First, you have to define the variables. Very good. First we'll define the variable. So how many inputs we are taking from the user? 4. 4. So how many variables we need? 4. 4 variables. Okay. The roll number का ये जो roll number है उसका data type क्या होगा variable का? Number. हाँ, that we call integer, right? Okay. Then we have name. तो name का data type क्या रहेगा? Sorry. Character. Very good. Okay, एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं email. ठीक है, यहाँ पे एक ईमेल भी ले लेते हैं. लेट्स से xyz@gmail. यहाँ पे मुझसे थोड़ा ठीक से नहीं लिखा जाएगा, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है. हाँ, इन शॉर्ट हमें ये इतनी 5 चीजें, वी वांट 5 थिंग्स फ्रॉम द यूजर. कैरेक्टर, व्हाट वुड बी द डेटा टाइप फॉर द जेंडर? Character. Character. For the percentage? Float. Float. And for the email? Character. Character. Right, very good. So see, let's define the variable first. So first I'll define int, first my roll number. So I'll take the roll number as my variable, roll number. Okay, तो इतना हो गया. Is there any integer? No. Now let's take the float. Float के लिए percentage है. So my variable name would be per. हम इतना लेंगे. Now see, today my focus is on this thing. Care. If you notice, we have
three different types of character inputs. Here only characters, here single character, and here characters and numbers. And let's see, यहाँ पे मेरा ID है xyz1. Let's say मेरा email ID है xyz1@gmail.com. So this is the combination of letters, numbers, and special characters, right? So three different types of character input we are going to give to the system. So how will we do it? So first, name. So char, ये बहुत ध्यान से देखना बिकॉज आज का फोकस कैरेक्टर पर ही है. So I am taking the name as my variable because here multiple characters we have, so we need to take array. अभी इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट जस्ट कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, एरे. अब ये होता क्या है, when you want to store multiple letters, multiple characters or this type of thing in a single variable, we need a array. तो उसके लिए हम लिखेंगे कुछ ऐसा, स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, अब मैक्सिमम नाम की लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो हमने सोचा कि चलो 15 से ज़्यादा लंबा नाम तो होगा ही नहीं, सो 15. सो दिस इज योर एरे. एरे को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट राइट नाउ जस्ट कीप इन माइंड वन वर्ड, दैट इज एरे. कब लेंगे, when we want to store multiple letters or a group of letters, characters or special characters in a single variable. So here what we are going to do, here we are going to store a name, this name in this variable, right? But this name may contain, or of course it contains multiple characters, so we have taken the subscript, and inside the subscript we write the range. कि भाई ये कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर, वी नीड एरे. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस Yes, मैम. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. चलो अब सेकंड लेते हैं. सेकंड इज योर जेंडर. सो जेंडर के लिए यहाँ पे कॉमा, बिकॉज कैरेक्टर है, सो वी कैन टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टर टाइप इन अ सिंगल लाइन. Char, name 15 is done. Gender के लिए we can take any variable. I have taken gen only. अब उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, so I don't need to take an array. Now next is a email. So I am taking the variable, यहीं पे लिख सकते हैं, but मैं नीचे लिख रही हूँ email. So email contains more than one character. Yes or no? Email contains more than one Yes, character. ma'am. yes, ma'am. It may Yes, have ma'am. a letters, it may have a numbers, it may have a special characters, and so I cannot store it in a single variable, and so I need an array. And for that I'll write the subscript, and inside the subscript I'll write the range. So maximum email address की size क्या होगी, maximum चलो 20. Well, we can increase the size, but tentatively we can keep this. So now we have name and the email. इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, सो ये बात हुई कि भाई हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे. हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे, वी देयर इज वन वर्ड. चलो अब इनसाइड द मेमोरी क्या होगा, देयर इज वन वर्ड string. So if I write 1 2 3, how will you read this 1 2 3? How will you read? How we can read this 1 2 3?
223. Yes, ma'am. Okay. If I say this now, 123. 1230. exactly right, 1230. But if I write the same number in double quotes, so now it is no more a number. This is a string. And so now I cannot read it as a 1230. Now it is 1230. So there is a difference between a simple 123 and the double quotes 123. So whenever you find inside the double quotes, whenever you find anything inside the double quotes, it is nothing but the string. और वो string कुछ भी हो सकता है. String is nothing but the group of numbers, letters and characters. कुछ भी हो सकता है. I'll just give you the example. X, Y, Z is a string. X1 is a string. X dot 1 is a string. 1, 2, 3 is a string. 1, 2, 3 India is a string. 1, 2, 3 India at gmail.com is a string. So anything inside the double quotes, we can call it a string. अलग तरीके से लेते हैं. Anything which can have a more than one character, or a group of characters and the number, or group of characters, number and special characters, or a group of numbers inside the double quotes, everything we consider as a string. So if I write X and if I write another X, so there is a difference if I say single quotes and the double quotes. So if I say X inside the single quote, तो ये मेरा single character हुआ. But when I say X inside the double quotes means it's a string. But normally, whenever we have a more than one character, we call it a string. This is the rarest of the rare case. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. सबको समझ में आया ये concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so can I say that now whenever I want to store this type of string, I need array. So whenever you want to store this type of string, we always need a array. और array का structure क्या है? What is the structure of array? The structure of array is name, subscript and any number. So ये जो number होगा, this is your range and this is called the base address. ये technical terms है. Whatever the variable name, this is your variable name. Then subscript, that is square bracket. Inside that square bracket, we will write any number. So whatever the variable you have taken is your base address, and whatever the number you have mentioned inside the subscript or the square bracket, we call it a range. And this is the structure of the array where you can store the string. समझ में आया? Yes, ma'am. Right? So ऐसा कुछ भी है which you want to store this type of inputs, always consider them as a string and always take the array. Okay, so fine. चलो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. If you want to write notes, if you want to write anything about this
देन जस्ट राइट इट डाउन, फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो देख लो एक बार जो भी हमने किया, just write down few points, whatever comes into your mind, it will be helpful. Write down. Just like you can write what is string, how we can define the string, what is the structure of the array, when you can use the string. Write down. Done. आप लोग लिख भी रहे हो या नहीं? लिख रहे हैं मैम। यस मैम, लिख रहे हैं मैम। चलो तो ठीक है, गुड. Let me know once you are done. Done, guys? यस मैम। Okay. चलो सो कंटिन्यू करें आगे. अब देखो. Yes, ma'am. ओके, सॉरी. Now we will see that how to store that string inside the memory, or how it gets stored. So let's say that here we have the memory blocks. मेरे साथ करता हूँ ये, do it with me. Just draw few blocks. ठीक है, चलेगा. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, but I hope you people can understand. Okay, so these are the memory blocks. If I say int n, if I say int n, so what it does inside the memory, it will just occupy any random space. उसको जहाँ पे भी जगह खाली मिलेगी, it will occupy, it will reserve that space for the variable no. So whatever I store in the no, it will go to that location. So let's assume कि ये वाली जगह उसने occupy की. So this is my no. ठीक है, हम लोग अभी सब 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट. नॉट जस्ट कंसिडर दैट 1 बाइट, और हम सब समझने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज माय no लोकेशन. नाउ इफ आई से float, instead the float, let's say char. First I'll take the gender. So because my gender is a single character, तो वो कहीं पे भी randomly, let's say उसको यहाँ पे जगह मिली, तो उसने इसको नाम दे दिया gen. So whatever I store, वो यहाँ पे जगह store करेगी. But now when I say name, let's say हम फिलहाल के लिए
5 कंसिडर करते हैं, हाँ मैक्सिमम साइज 5। तो वो कैसे करेगा मेमोरी में? Here it requires 5 consecutive locations. Always mind, keep in mind consecutive locations. उसको कंटिन्यू 5 स्पेस खाली वो ऐसी ऐसी जगह चाहिए. सो इट इज यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द मूवी थिएटर कि मान लो कि हम 10 फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो हम ऑलवेज ऐसा चाहते हैं कि भाई 10 एक साथ सीट्स मिले, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 वहाँ पे 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे. नो, वी वांट 10 consecutive seats. In the similar way, when we talk about the array, it requires consecutive memory locations. So वो क्या करेगा? कहीं पे भी देखेगा कि ओके भाई कहाँ पे मुझे 5 जगह खाली मिल रही है. यू हैव टू टेल मी, क्या इसको यहाँ पे मिलेगी? Here in the first row, फर्स्ट रो में 5 No, ma'am. कंसेक्यूटिव नहीं है, No, सेकंड में ma'am. है, सेकंड में है, सेकंड में है, थर्ड, बाकी सब में है. तो चलो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसने यहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव लोकेशंस को रिजर्व किया, 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो ये मेरा रिजर्व हो गया, इस पोर्शन, दिस मच. तो ये मेरा नेम के लिए रिजर्व हो गया. अब कोई भी हम रैंडम कोई भी लेते हैं, लेट्स से कि ईमेल, हमारा ईमेल था ना. सो ईमेल के लिए आई नीड 10. तो अब इसके पास 10 तो है नहीं, तो वो बोलेगा मेमोरी आउट ऑफ स्पेस. ऐसा ऐसा मैसेज आएगा आउट ऑफ स्पेस करके, और आउट ऑफ मेमोरी करके एरर आएगा. इफ इट डज नॉट हैव इनफ सफिशिएंट मेमोरी टू स्टोर योर डेटा, तो वो ऐसी एरर देगा. एंड आई गेस सबने ये एरर देखी है, आउट ऑफ मेमोरी वाली, राइट? नो स्पेस और कुछ भी एरर आती है. बट इसका भी एक सॉल्यूशन होता है, that inside when we do the memory management. वो बहुत detailed part है, we don't need to understand that thing, but right now just keep in mind. So we always have such type of mechanism inside with the operating system. तो वो हमारे लिए 10 जगह तो बना ही देगा, right? So this way, this is how it occupies the memory inside the on the board, we can say. Is this clear to everyone कि वो किस तरह से अरेंजमेंट होगा inside the memory? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इसको हम थोड़ा आगे करते हैं. चलो, डिफिकल्ट होता है यहाँ पे. एनीवेज, सो एनो, व्हेन आई से एनो, तो एनो से मैंने बोला कि मैं मुझे 10 इंसर्ट करना है, तो उसने यहाँ पे 10 डाल दिया. जेंडर में मैंने एफ इनपुट किया, तो एफ आ गया. अब नेम में लेट्स से आई एम एंटरिंग और लेट्स से इट्स 5 नेहा. तो व्हाट इट डज पता है, बिकॉज हमारे पास इतना पूरा लोकेशन है, 5 लोकेशंस, राइट? कंसेक्यूटिव 5 लोकेशंस वी हैव. तो वो क्या करेगा, व्हेन यू से नेम इज इक्वल टू नेहा, तो वो हर एक लेटर को एक एक लोकेशन पे इनपुट करवाएगा. NEHA, दिस वे, NEHA. तो जितना बड़ा नाम, लंबा नाम होगा, हर एक लोकेशन पे वो एक कैरेक्टर इनपुट करता जाएगा. सो दिस इज हाउ इट स्टोर्स योर इनपुट इनसाइड द memory when we say that it's a string. So how string gets stored inside the memory? So this is the answer for that question. How strings get stored inside the memory. समझ में आया? Yes, ma'am. Write down. Write down. It can be the question how string gets stored inside the memory. Write down.
Someone raised the hand 442. It's स्वप्निल मैम. Sorry? डाउट है मैम. हाँ बोलो बोलो. What's your name? स्वप्निल. स्वप्निल अपना नाम मेंशन करो प्रोफाइल में. आज ही चेंज अभी करो. अभी नहीं ठीक आज. है. हाँ. बोलो कौन सा क्वेरी. मैम अभी आपने बोला कि यहाँ पे ईमेल में 10 है, मतलब रेंज 10 है. अगर उसमें स्पेस नहीं रही तो एरर आएगा. अभी नहीं आएगा स्वप्निल, बिकॉज हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होता है, बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, बट वो मेमोरी मैनेजमेंट का सेक्शन है, हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड द पेजिंग इन द ओके. कंप्यूटर्स. सो वो नहीं आता इतने, मतलब इतनी छोटी छोटे डेटा के लिए नहीं आती. सो इट्स स्मॉल साइज ऑफ कंटेंट तब आती है एरर. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 GB, जैसे कि when you try to install some game or application in your mobile phone, if there is no sufficient space तो वो एरर देगा. बट इट विल नेवर गिव द एरर कि भाई आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते. इनसफिशिएंट मेमोरी के लिए कभी डेटा नहीं आता, ऐसा नहीं होगा. It will only restrict you for the large amount of space. ओके मैम. Yeah. Okay. Done, guys. Any other query? No, ma'am. Done, ma'am. Okay. Good. ठीक है. So this is the concept of the string, that how you can work with the string when you uh, working with the C programming. This name, email, and string is done. Array का तो पूरा टॉपिक है, that we will learn later on. This is string. Okay. Now next question. चलो. हमारे पास कितनी चीज़ें हैं. वी हैव रोल नंबर, देन वी हैव नेम, देन वी हैव जेंडर, देन वी हैव परसेंटेज, एंड देन वी हैव ईमेल. राइट. सो हम इसका प्रिंट एफ स्कैनफ लिखते हैं. हाउ टू राइट द प्रिंट एफ. तो ठीक है कि भाई एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर जेंडर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर. ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे. एंड हियर वी विल हैव आवर स्कैनफ स्टेटमेंट. चलो बोलो क्या लिखेंगे स्कैनफ में. परसेंट. पसंदी. देन चलो आप लोग ही बोलोगे पूरा स्टेटमेंट. फॉर्स क्लोज करोगे. अभी क्लोज करो. एंड रोल नंबर. कॉमा कॉमा. हाँ, कॉमा कॉमा एंड एम्परसेंड अम्परसन. अम्परसन. रोल नंबर, मतलब वो जो हाँ, रोल भी. नंबर. वेरिएबल जो भी लिया है. हाँ, हमने रोल ऐसा लिया था, रोल अंडरस्कोर एनओडी. नंबर. दैट वाज द वेरिएबल. करेक्ट. यस मैम. Very good. So roll number is an integer, so it is very clear to us. Same for the percentage. Percentage के लिए what we will do, instead of the %d we will write the %f और comma और %, करके per is the variable name. हम ऐसा करेंगे. बट हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो इन 3 चीज़ों के लिए है कि how will we take the input और how will we store the data inside the memory. So हम सबसे पहले बात करेंगे नेम के लिए. ठीक है. See, there are two different ways to take the string. So first हम लोग नेम के लिए बात कर रहे हैं. scanf डबल कोट्स %s
comma, because this is a string, because this is sorry, array, simply write name. ऐसा, this is the one thing, one option. ampersand नहीं लिखेंगे. Second option is get s और bracket में only name of the variable. So there are two different types, two different methods to take the input of a string. First, simply scanf. Inside the scanf, use the %s. Use the %s format specifier in the double quotes, comma, name of the array. Don't mention the ampersand sign. Simple. So this is first method. Second method, another function you can use, that is if you don't want to use the scanf, go for the getS. We will also see the difference between the scanf and getS because दोनों में फर्क है जो हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे देखेंगे. So getS you can use. In the getS you only need to mention the name of the variable inside the brackets. That's it. But if you are using getS, include the header file string.h. अब अगेन काफ़ी कंपाइलर्स एरर देते हैं, काफ़ी कंपाइलर्स एरर नहीं देंगे. लेटेस्ट वर्जन होंगे तो वो एरर नहीं आएगा. बट स्टिल just make the practice to add the libraries if you are using any function from that particular library. So this is how you can take the string input. Is this clear? Yes, ma'am. मैम Right? Yes. ये लाइब्रेरी हम जब चाहे तब कोडिंग में लिख सकते हैं कहीं या स्टार्टिंग में लिखना होता है? आवाज कट रही है. Your voice is not clear. ये लाइब्रेरी के लिए इंक्लूड आपने लिखा string.h. वो कहीं भी लिख सकते हैं या स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ता है? नहीं, एकदम स्टार्टिंग में, void main से पहले, header section में, only in the header section. मैम Okay. हाँ, मैम नेम में कैरेक्टर्स क्या सॉरी परसेंटेज सी नहीं आएगा? %c नहीं, s इसलिए आएगा because here we have multiple characters. Name is my string. नेम जो है वो स्ट्रिंग है because it has multiple characters, more than one characters. That's why s. अगर सिंगल कैरेक्टर है, जैसे कि चलो हम इसी को आगे करते हैं. जैसे कि अब हम बात करेंगे जेंडर की. लेट्स टॉक अबाउट द जेंडर. तो जेंडर में क्या होगा? जेंडर के लिए %c लगेगा because there is only single character, but here you need to write ampersand sign. ऐसा, this is the difference. स्ट्रिंग के लिए %s and you don't need to write the ampersand sign, but जेंडर में तो मैम सिर्फ फिर एक ही नीचे गेट एस के बदले गेट ch हो जाएगा फिर वहाँ पे. यहाँ पे वो अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम है. हाँ, हो सकता है बट वो हम अभी नहीं करेंगे. ओके अभी नहीं करेंगे. राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड द सिंगल कैरेक्टर. तो ईमेल के लिए क्या होगा? चलो बताओ, ईमेल के लिए क्या होगा? बोलो. एक्स एस ईमेल सिर्फ ईमेल, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो सिर्फ ईमेल है. सिंपल. और यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं हम. यू कैन सिंपली यूज द यस कैरेक्टर्स मैम ईमेल. सो अब कोई ऐसा मत करना कि दोनों स्टेटमेंट यूज करो. आइदर यू कैन यूज, आइदर स्कैनफ और कैरेक्टर्स, दोनों में से सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द इनपुट. और सेम विद द प्रिंट एफ. अगर सब मल्टीपल कैरेक्टर्स प्रिंट करवा रहे हो स्ट्रिंग तो यूज द %s, एंड अगर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हो तो यूज द %c इन द प्रिंट एफ स्टेटमेंट. सिंपल. ओके. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम. Okay, if you want to make the notes, write down.
Okay, done everyone? Guys, done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है सो आई गेस इनफ फॉर टुडे आज के लिए इतना द सेम प्रैक्टिकल वी विल परफॉर्म ऑन वेडनेसडे बट यू पीपल डोंट ट्राई दिस प्रैक्टिकल एरर आएगा फिर डर जाओगे कि ये क्या हुआ नहीं आ रहा है बिकॉज आई नो व्हाट टाइप ऑफ एरर्स कैन बी अकर्ड सो डोंट ट्राई करना है तो कर सकते हो बट फिर एरर आएगी तो मैसेज मत करना कि ग्रुप में कि यार एरर आ रही है मैम इसका क्या होगा बिकॉज आई एक्सप्लेन इट ऑन वेडनेसडे ठीक है ओके मैम। Okay, ma'am. any other doubt or a query No, ma'am. नो मैम। okay